છે બે એક જ વસ્તુ છે. પ્રાણથી સૂક્ષ્મ મન છે અને મનથી સૂક્ષ્મ પ્રાણ છે. આ બંને એક સાથે ખડા થાય છે. એક સાથે ખડા થાય છે. સત્તા આપનારા તો તમે જ છો. ક્યાંથી ખડું થતું હશે બધું? એ આ શરીર જુઓ, આખું બ્રહ્માંડ જુઓ, પ્રાણ જુઓ, મન જુઓ, કોઈક એવી ચૈતન્ય સત્તા છે તેમાંથી ખડું થાય છે. જાણી જશો તો તમારો આત્મા જ છે. આ તમે આ હોલમાં બેઠા છો, લો તો આ બેઠા છો એ બતાવે છે આના પહેલા ક્યાંક હતા. ક્યાંક હતા એ સાબિત ના કરવું પડે. હવે અહીં બેઠા છો એટલે આ દીકરીની સગાઈ થઈ, જુઓ એ બધા સીધા હોટલમાંથી આવ્યા છે, મતલબ હોટલમાં હતા. આ બાપજી સીધા ગુફામાંથી અંદરથી ભોયરામાંથી બહાર આવ્યા છે. બા એમના રૂમમાં હતા, અહીં બેઠા છે એ બતાવે છે ક્યાંક હતા. સાહેબ એમના ફાર્મ પરથી આવ્યા છે, પેલા દુકાન બંધ કરીને આવ્યા છે શટલ. અહીં બેઠા છે એટલે ક્યાંક હતા એ નક્કી છે. ક્યાંક હતા એટલે એના પહેલા ક્યાંક હતા, એના પહેલા ક્યાંક હતા, એના પહેલા ક્યાંક હતા, એના પહેલા ક્યાંક હતા. આ રૂમાલ છે જો અહીં દેખાય છે એટલે ક્યાંક હતો પેલા. ક્યાં હશે બા? આ બાવાની થેલીમાં હતો કે બાપજી બેસે એટલે મૂકવાનો છે, એની થેલીમાં રાખી મૂકે સવારથી. થેલીમાં હતો એના પહેલા ધોબીની દુકાનમાં હતો, એના પહેલા કબાટમાં હતો, એના પહેલા આ મુકેશભાઈ જેવી કોકની દુકાન હશે એ દુકાનમાં હતો, એના પહેલા હોલસેલમાં હતો, હોલસેલ વાળાના ત્યાં હતો, એના પહેલા મિલમાં હતો, એના પહેલા શાળ ખાતામાં હતો. આ રૂમાલ પાછા પડજો. એના પહેલા રૂ હતો, એના પહેલા કપાસમાં હતો, એના પહેલા પૃથ્વીમાં હતો. પૃથ્વીમાંથી બહાર આવ્યું છે કપાસ. એ પૃથ્વી પહેલા જળમાં હતો, જળમાંથી પૃથ્વી થાય છે. એ જળ પહેલા અગ્નિમાં હતો, અગ્નિ પહેલા વાયુમાં હતો, વાયુ પહેલા આકાશમાં હતો. આનો આ રૂમાલ. અને એના પહેલા આ પાંચે તત્વોના મૂળ કારણ પ્રકૃતિમાં હતો. અને પ્રકૃતિ પહેલા એ શુદ્ધ ચિદાનંદ બ્રહ્મ મારામાં હતો. તો કે આ પ્રકૃતિ શું છે? મારો સંકલ્પ જ છે, મુજ ચિદ બ્રહ્મનો ઉઠેલો સંકલ્પ છે. જેવી રીતે પાછા પડો. આ પહેલી વખત આયા છે ચિત્તોડગઢથી ભાઈ, હમણાં હોલ નથી, આજે જ જોયો છે. પણ જે બહુ જૂના આવે છે એને હોલ નતો જોયો. અહીંયા હોલ નતો, કશું એ નતું. यहाँ कुछ नहीं था. હોલ ક્યાંથી આવ્યો છે? આમણે તો જોયો કે હોલ બન્યો છે. હા, બહુ સરસ છે. પણ આ હોલ ક્યાંથી આવ્યો છે? વિચાર કરીને જુઓ. હા, બેઠા બેઠા અહીંયા સંકલ્પ થયો હતો કે આટલા બધા ભક્તો આવે છે, એક હોલ હોય તો સારું. આ મારો જ સંકલ્પ હોલ બની ગયો. જો તમારું ઘર તમે બનાવ્યો છે, બંગલો, તમારો સંકલ્પ બંગલો બની ગયો છે. તમારો સંકલ્પ ઝૂંપડું બની ગયો છે. તમારો સંકલ્પ ગાડી બની ગયો છે. તમારો સંકલ્પ સાયકલ બની ગયો છે. ચેતન આત્મામાંથી ઉઠતો સંકલ્પ આ હોલ બની ગયો. જુઓ, પણ એ હોલ સંકલ્પ હતો કે બહુ બધા આવે છે તો આ થાય તો કેવું? એમ મુચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મા સૃષ્ટિની આદિકાળમાં જે સંકલ્પ रूप पूर्ण થાય છે वही प्रकृति है. प्रकृति कुछ नहीं है, ब्रह्म का स्फुरना है. ब्रह्म स्फुरित होता है तो प्रकृति में सारे पदार्थ थे. આ પહેલા ક્યાં હતો? ફરી પાછા પડો બા. ક્યાં હતો? તો કે આ તો રૂમાલ ક્યાં હતો ભાઈ? રૂમાલ તો આ બાવાની થેલીમાં હતો પેલા. અહીં બતાવે છે એટલે પહેલા ક્યાંક હતો દાદા. તો બાવાની થેલીમાં હતો, એના પહેલા ધોબીના ત્યાં હતો, એના પહેલા કબાટમાં હતો, એના પહેલા આ મુકેશભાઈ જેવાની દુકાનમાં હતો, એના પહેલા હોલસેલમાં હતો, એના પહેલા મિલમાં હતો, એના પહેલા તાણાવાણાના રૂપે હતો, એના પહેલા રૂના રૂપે હતો, એના પહેલા કપાસના ઝીંડવામાં હતો, એના પહેલા પૃથ્વીમાં હતો. અને એના પહેલા ક્યાં હતો?
કે એના પહેલા જળમાં, વાયુમાં, તેજમાં, અગ્નિમાં, આકાશમાં, એના પહેલા એ મૂળ પ્રકૃતિમાં હતો. મૂળ પ્રકૃતિ ક્યાં હતી? મારામાં હતી. હા, હું સંકલ્પ કરીને હોલ બનાવ્યો છે, એમ ચિદાનંદ બ્રહ્મ મેં સંકલ્પ કરીને આ પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિના કાર્યમાં બ્રહ્માંડ બનાવ્યું છે. अपने मैं को वहां जाके देख लो. हाँ, આ હોલ બનાવ્યો છે. आवड़ा घड़ा में आकाश हो तो आकाश तो अनंत है. आकाश की अनंतता है, अनंतता है. आकाश छोटा नहीं है, घड़ा छोटा है. मैं छोटा नहीं हूं, देह छोटा है. हाँ, तो कीड़ी का देह होता है और ब्रह्मा का भी देह होता है, लेकिन सब में जो मैं बोल रहा है वो चेतन कौन है? आद सत, जुगाद सत, नानक औ से भी सत, जो पहले था और बाद में रहेगा और अभी भी है. એ પરમાત્મા તત્વને ઓળખી જાઓ તો પ્રકૃતિ તો માયા તો એ ચેતન પુરુષમાંથી, બ્રહ્મ પુરુષમાંથી, મારામાંથી ઉઠેલું સ્ફુરણ છે. આ સ્ફુરણા તો જુઓ, રોજ રાતે સૂઈ ગયા છો, બધું પ્રલય થઈ ગયું છે, બધું ખોવાઈ ગયું. બા પુરુષ નહીં, સ્ત્રી નહીં, મેં નહીં, તું નહીં, તે નહીં, આ नहीं, जड़ नहीं, चेतन नहीं, ईश्वर नहीं और जीव भी नहीं. सारे का सारा लय हो जाता है. हाँ, लय हो जाता है. सवारे उठो એટલે તમારા સંકલ્પોથી બધાને બહાર કાઢો છો. બા એવી રીતે સૃષ્ટિની આદિમાં હું જ તે અકાલ પુરુષ બ્રહ્મ છું, જે મારામાં એકોમ બહુશ્યામનો સંકલ્પ થઈ જતા મારું સ્ફુરણ, મારો સંકલ્પ, મારું સ્પંદન, મારું સંવિત, मेरी कल्पना અને આજ પ્રકૃતિ છે. આ વસ્તુ ક્યાં હતી પહેલા? તો કે આદિ કારણ પ્રકૃતિમાં હતી. અને જઈ ક્યાં રહી છે? પ્રકૃતિ તરફ જ જઈ રહી છે, નહીં કે તરફ જા રહી. દેખો, થોડા દાડા ઘસતા ઘસતા ઘસાઈ જશે, પછી તો આને પોતામાં લઈ લેશે. આરે બાવો આ રૂમાલને પછી પોતું કરશે આનાથી, પછી તો ગાભો થઈ જશે. हाँ, એટલે ગાભો થયા પછી तो बिल्कुल અહીંયા પડ્યું હશે. पृथ्वी में जा रही है, जल जल में जा रहा है, वायु में जा रहा है, आकाश में जा रहा है. सभी प्राकृतिक पदार्थ प्रकृति में लीन हो जाते हैं. ये पदार्थ नहीं थे तब भी मैं था और ये नहीं हो जाएंगे, तो उसको नहीं कहने वाला भी मैं होता हूं. और इसको इस रूप में प्रमाणित करने वाला भी मैं हूं. उस मैं को जान जाओ, એ મેને ઓળખી જાઓ જે અખંડ છે, આપણા બધા વચ્ચે એક જ છે, शुद्ध છે, ब्रह्म છે. प्रकृति रूप पूर्णा इसमें होती है, नहीं होती है तब भी मैं तो हूं. जैसे तरंग रूप पूर्णा नहीं होती है फिर भी जल तो होता है. ऐसी प्रकृति की पूर्णाएं नहीं होती हैं, माया की पूर्णा नहीं होती है तब भी मैं होता हूं. ये पूर्णा मेरे में क्यों होती है? बस ऐसा मेरा स्वभाव है, उस ब्रह्म का स्वभाव है. जैसे जल का स्वभाव है तरंग बनना, ऐसे ही मुझ ब्रह्म का फूरना ये प्रकृति है. तो प्रकृति फूरती है आकाश में, जल में, वायु में, तेज में, अग्नि में, पृथ्वी में, और सारे पदार्थ पांचे तत्व में कल्पित होते रहते हैं, उसी में मिल जाते हैं. ऐसा मैं क्यों करता हूं? अरे ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मैं क्यों करता हूं? महद ब्रह्म मम योनि बीज प्रदहम पिता. ये महद ब्रह्म मेरी योनि है हे अर्जुन, और बीज रखने वाला पिता मैं हूं. हम कहते हैं भगवान जिसको मैं बोलते हैं वही तुम्हारा मैं है. એની સાથે પોતાનો હું મેળવી દેશો તો આ તાળું ખુલી જશે. એની સાથે પોતાનો હું મેળવી દેશો તો જે ભગવાન કા मैं है, शुद्ध मैं, वही तुम्हारा मैं है, शुद्ध, जो प्रलय के बाद भी नहीं मरता है. हाँ, लेकिन अपने આપણો હું ત્યાં નથી બેઠેલો, આપણો હું તો શકરાભાઈ, પશાભાઈ, પેથાભાઈ થઈ ગયો છે, ઝાલા જાડેજા થઈ ગયો છે. अरे घड़ा होता है, घड़े में जल होता है, तो लकड़ी मार दो तो घड़ा फूट जाएगा.
और जल बह जाएगा, आकाश का क्या होगा? आकाश तो ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। वैसे ये शरीर गड़ा है, गड़े तो बनते रहते, बिगड़ते रहते, फूटते रहते, फिर नए बन जाते। और इस शरीर रूप गड़े में ये जल रूप अंतःकरण है, जो रजोगुणी होता है, सतोगुणी होता है, तमोगुणी होता है, शुद्ध होता है, शांत होता है, स्पंदन वाला होता है, स्पंदन रहित होता है। और वो भी कभी बह जाता है प्रकृति के साथ। तो गड़ा फूट जाता है नंदुमय, गड़ो फूटी जाए छे, जल वही जाए छे, पण आकाशનું શું થાય? ऐसे ही એ જ રીતે આકાશ જેવો તમારો આત્મ વસ્તુ છે, બ્રહ્મ છે, स्पंदन रहित છે। तो मुझ में जो स्पंदन उठ रहे हैं वही ये प्रकृति है। स्पंदन से अपने को पृथक जान लो, पहली तो बात ये है। आप जान लो और अपने को वहां जाके मानो। नानी नानी वातमां पछी गड़ानुं आकाश गड़ो थईने बेस्યું तो भड़केलू रहेशे। छोटापन आपको नहीं अच्छा लगता है क्योंकि आप व्यापक है, विभू है, पूर्ण है। मरना आपको नहीं अच्छा लगता क्योंकि आप अमर है। अज्ञान आपको नहीं अच्छा लगता क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप है। और दुख आपको नहीं अच्छा लगता क्योंकि आप आनंद स्वरूप है। अपने स्वभाव के विपरीत आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है। कोने मरवू गमे? भगवान कोईने गमता हो कि ना गमता हो, पण मरवू कोई गमतुं नथी। कि भगवान नहीं गमता है शू कारण? अरे जो वस्तु साकार में आती है वो सबको संतोष नहीं दे सकती है। राम आ गए तो फिर सबको नहीं संतोष दे सकते, आकार में आ गए तो दो भी होता है, उसको अच्छे नहीं लगते राम। तो कृष्ण आ गए, सबको अच्छे नहीं लगते। ये वस्तु साकार में आवे केम? कारण के बधाना मन जुदा जुदा है, रुचि जुदी जुदी है, रुचि में भेद है, बुद्धि जुदी जुदी है। માટે एक साकार वस्तु कभी को पूर्ण, सबको पूर्ण संतोष नहीं दे सकती। नंदुमाई नहीं दे सकती है। सबके मन अलग अलग है, मति अलग अलग है, धारणा अलग अलग है, रुचि अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है। तो कोई ने धनुष वाला भगवान गमे, कोई ने मुरली वाला, कोई ने आ बे ना गमे, हाव फक्कड़ती सूड़ वाला गमे। ये तो रुचि नाम वैचित्र्यात् पुष्पदंताचार्य कहता है। ये रुचि भेद के कारण ऐसा होता है। भगवान को जैसे है वैसे देखने की इच्छा करो तो मन अपनी रुचि के अनुसार इस सारे के सारी कल्पना करता रहता है। आवो ये ब्रह्मांड नहीं था तब क्या था, उस तत्व का विचार करो। कोई तो होता है ना, तो क्या था? आ रुमाल क्या હતો बा? हाँ पाछा पड़ी गया, प्रकृति में હતો। ये प्रकृति उसके मूल कारण में से सबको जन्माती रहती है। अध्यक्षता तो मेरी है। जैसे मैं नींद में से उठ जाता हूं और संकल्प की सृष्टि शुरू, ऐसे ही इस सृष्टि के आदि में एक अखंड, एक रस, अद्वैत, ज्यों का त्यों ब्रह्म है आदि में, दूसरा कुछ नहीं है। हाँ, और उसमें स्फुरित होता है ये माया, ये प्रकृति का फूरना। उसी से नाना प्रकार की सृष्टि खड़ी होती है। खड़ी होती है, याद रखना। आ वस्तु अहींना अहीं नहीं रहे हवे थोड़ी वार पछी बा। आ वस्तु छे बतावे छे पहला क्यांक हती अने छे એટલે बतावे छे हमणा अहींना अहीं नहीं रहे। हमणा सत्संग पती जशे એટલે बावो उभो थईने तेली मिल। प्राकृतिक पदार्थ कभी वैसे के वैसे नहीं रहते, बदलते हैं। ये शरीर कितनी बार बदल गया देखो। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड बदलता है तो कहां जाता है? उसी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और मेरा मुझ चिदानंद ब्रह्म का संकल्प क्षीण हो जाता है तो प्रकृति भी गुम हो जाती है, मैं रहता हूं। इस प्रकृति का अभाव देखने वाला तो कोई होगा ना, अभाव को। જેવી રીતે બા એક 10 રૂમનો બંગલો છે, આ બાપુનો છે એવડો મોટો બંગલો, અને એમાં બહુ બધા મહેમાન આયા છે। આ મેઘાની સગાઈ હતી એવી સગાઈ હશે અને બધા મહેમાન આયા છે, કોઈ ક્યાંથી ક્યાંથી, ચિત્તોડગઢથી ત્યાંથી।
આમાં આખો દિવસ બધું ચાલ્યું, મહેમાનને સાંજે 7 વાગે જવાનું હતું ચિત્તોડગઢ, એ નીકળી ગયા, બધા નીકળી ગયા. હવે ઘરનો જે માલિક હતો એ જ બચ્યો છે અને એનો દીકરો બચ્યો છે. 10 રૂમ હતા. એમને પણ સાંજે 7 વાગ્યા પછી બહાર જવું હતું. એટલે દાદા એના બાપા હતા એ નીચે આવી ગયા છે, દરવાજા ઉપર આવી ગયા. અને છોકરાને કહે છે કેટલા બધા મહેમાન હતા, જ્યાં અંદર જઈને જોઈ આવે કોઈ છે તો નહીં, કોઈ રહેતો નહીં ગયા અંદર. તો છોકરો આ કાનાની ઉંમરનો છે, જોવા ગયો અંદર જોવા ગયો છે. અને જેવો અંદર જઈને જોયો 10 રૂમમાં, એને બૂમ પાડી કે પિતાજી કોઈ નહીં હે ઘર મેં તો. એટલે એના બાપુજી બહાર હેન્ડલમાં તાળું મારતા હતા. એટલે છોકરાએ કીધું પિતાજી કોઈ નહીં है, उसको कहने वाला मैं तो हूं. कोई नहीं है उसको कहने वाला मैं होता है, कोई होता है कोई नहीं है. तो सारी प्रकृति शांत हो जाती है, फिर भी कोई कहने वाला देखने वाला बचता है. वही ब्रह्म है, दृष्टा है, अभाव का भी दृष्टा. वही दृष्टा आपके देह में बैठा हुआ है. देखो सबको देखने वाला. शरीर की अवस्था आती है, जाती है, बनती है, बिगड़ती है. मन के संकल्प विकल्प भी आते जाते रहते हैं. कभी सुखाकार होता है, कभी दुखाकार होता है, कभी हर्ष होता है, कभी शोक होता है. उसको भी देखने वाला कोई है. तो बुद्धि के फूरना है. बुद्धि का विचार भी बदलता रहता है. एक जैसी बुद्धि नहीं रहती है, बुद्धि बदलती रहती है. ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उसकी बुद्धि है, इस सबको गहने मान रहे हैं. और रमकड़ा ने संपत्ति माने. ये बुद्धि तो बदल गई तुम्हारी. देखो हाँ, रमकड़ा ना नाम बदलाया है खाली. बुद्धि बदलती रहती है, फिर भी देखने वाला जो कहते हो वो नहीं बदलता है. तो नंदुमा ये अहंकार की अपनी मान्यता होती है, वो भी बदलता रहता है. मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं, ये हूं, ये भी बदलता रहता है. फिर भी देखने वाला तो जो का त्यों है, दृष्टा आपका आत्मा ही है, निर्विकार. उसमें विकार नहीं होता है, विकार प्रकृति में होता है. ये प्रकृति में फेरफार प्रकृति में થાય છે, તમારામાં नहीं. स्पंदन भी प्रकृति में हो रहे हैं, तुम्हारे में नहीं हो रहे हैं. पहले तो ये बात जान लो. तो मन का स्पंदन और प्राण का स्पंदन रोकना नहीं पड़ेगा. दोनों एक साथ खड़े होते, याद रखना. मन का स्पंदन और प्राण का स्पंदन एक साथ खड़ा होता है. कैसे बंद हो, ऐसे पूछा है. तो पहले तो ये जान लो, उस तत्व ज्ञान को जान लो. तो बंद है कि चालू है, तुम तो उससे अलग ही हो. पहला ज्ञान तो यही है. પછી તો આ પંખો 5 ઉપર ફરે કે 1 ઉપર ફરે, કરંટને શું કે બંધ પડ્યો હોય તો કરંટને શું. એ પંખા બંધ हो जाता है तो भी करंट को क्या है. અને ગરમી મન લાગે તો 5 ઉપર ફેરવી દો તોય શું, અને 1 ઉપર ફરે તો કરંટને શું. तो सारी हलचल इस प्रकृति क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वश. इस सारे के सारे कर्म विकर्म अकर्म ये प्रकृति में हो रहे हैं, मेरे में नहीं हो रहे हैं. ये बात बैठती नहीं है तो फिर दूसरा उपाय है. चलो ये बात बैठ जाती हो तो खेल खत्म, खड़े हो जाओ. लेकिन ये बात नहीं बैठती है, सारी की सारी बैठ गई. मेरा मन शांत नहीं है. तू ही इस मन से साथ जुड़ के क्यों बोलता है. करंट क्यों जुड़ जाएगा. करंट जुड़ जाएगा फ्रिज के साथ, तो फ्रिज के साथ करंट जुड़ गया तो सभी वस्तु को ठंडा करता है. वही करंट हीटर में जुड़ जाता है, गर्म कर देता है सबको. तो तुम अंतःकरण के साथ जुड़ जाते हो, तब बोलते हो मेरा मन अभी स्पंदन कर रहा है. अरे कर रहा है तो कर रहा है, तू खड़ा हो जा. तू हट जा ना भाई. सारे प्रलयों के बाद भी जो नहीं मरता है वो तू है. पहले पक्का कर. और प्रलय कितने होते, प्रलय કેટલા હોય છે બા. શ્રીમદ ભાગવતમાં 12મા સ્કંદમાં માર્કંડ મુનિની કથા આવે છે. 12મો સ્કંદ તો રહી જ જાય છે બા. ક્યારેક ને કથા આપણે આપણા માટે કરીએ ત્યારે થશે, લ્યો આ યજમાનો માટે નહીં, રહી જ જાય. તો 12મા સ્કંદમાં કથા આવે છે માર્કંડ મુનિ. માર્કંડ મુનિની કથામાં પરીક્ષિત રાજા ને
सुखदेव जी कही रहा है प्रलय 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है नित्य प्रलय, जो व्यष्टि में होता है, यहां होता है नित्य प्रलय। जो आ કેટલો વ્યવહાર કર્યો છે, લીધું દીધું લેવડ દેવડ, મહેમાન આયા છે, મહેમાન જતા રહ્યા, આજે કેટલું બધું થયું છે। ગમતા મળ્યા, અણગમતા મળ્યા, હરસ થયો, શોક થયો। પછી જેવા રૂમમાં જશો ને એટલે પછી આ બધા ટાઈ પેન્ટ કપડા કાઢીને ઢીલા કપડા પહેરી લેશો, ખીચડી કઢી ખાઈ લેશો, પછી બત્તી બંધ કરી દેશો, सब लय हो रहा है। हाँ बा तो પછી વિચારો પણ ધીરે ધીરે શાંત થઈ જશે, इंद्रियों પણ शांत થઈ જશે। ઊંઘ आई गई तो अभी मन का फुरना चालू है, उसको सपना बोलते हैं। इंद्रिया शांत होगी लेकिन मन शांत नहीं हुआ, उसको सपना बोलते हैं। हाँ मन शांत, પછી ઉંદેડો ઘરમાં ફરાયો તો કેવો ગોળ ગોળ ફરે। हाँ मन को बाहर आने के लिए इंद्रिया चाहिए, लेकिन इंद्रिया तो लय हो गई है, स्लीपिंग मोड में आई गई। हाँ, तो अभी मन चालू है, सपना जोया करे છે, नाना प्रकारनी संस्कारजन्य जो आकृति है એ દોર્યા કરે છે अंदर, उसका सपना बोलते हैं। वो मन भी लय हो गया, प्रलय हो गया, नित्य प्रलय, कुछ नहीं है वहां। ઊંઘમાં શું છે કો? ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना कोई धनवान है, ना कोई गरीब है, ना कोई भणेलू है, ना भण है, ना कुछ मेरा है, ना कुछ तेरा है, ना मैं है, ना तू है। वृत्ति लय हो गई, नित्य प्रलय। एक नित्य प्रलय होता है, सारे का सारा लय हो जाता है। और सुबह उठते हैं तो अपने ही संकल्प में से बाहर निकालते हैं सबको। जैसे जैसा 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 संग्रह था वैसे जेवो जेवो संग्रह तो एवं एवं बाहर काटो छो। फिर रात में फिर प्रलय हो जाता है, नित्य प्रलय रोज होता है। दूसरा होता है नैमित्तिक प्रलय, ये परीक्षित। तो निमित्त प्रलय में शू थाय बा? आ कच्छ में भूकंप आयो जो एक विस्तार में प्रलय थई गयो। अहीं बैठा छे ने हमणां साणंद में भूकंप आव्यो तो नक्शा ऊपर आवशे नहीं, चिंता ना करता, पर नक्शा ऊपर थी जतुं रहे आखुं साणंद। कुछ निमित्त बनता है, नैमित्तिक प्रलय बोलते हैं इसको। सुनामी आ गई, भूकंप आ गया। एक तीसरा प्रलय होता है जिसको आत्यंतिक प्रलय बोलते हैं। आज ये सूर्य तपे छे, खाली 50 डिग्री तापमान थाय छे तो बधा केवा ओ एसी हांफवा मंडे। 50 तो थयुं नथी हजू, तो थई जाए कदाच राजस्थान में 48 49 हो जाता है, तो 50 में तो हाँ हाँ हाफी जीए छे। तो आत्यंतिक प्रलय में ऐसे 12 सूरज तपते हैं नंदुबा। आवा 12 सूरज एक साथ तपे थे। हे मार्कंड मुनि की कथा है। तो दूसरा सूरज तपता है, आ लोखंड पिघलवा मांडे, बाष्पीभूत थवा मांडे। तमे हूँ तो बीजो सूरज तपे ने पति जईए। आ जेटला पण राजा बनी बनी फरे छे, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, मैं धनवान हूं, मैं सत्तावान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, बधा ये आत्यंतिक प्रलय में उड़ी जाए छे बा। हाँ, फिर पृथ्वी रहती है खाली, पृथ्वी में भी गंध तन मात्रा शोषित हो जाती है, वो जल में लीन हो जाती है। जल में से रस तन मात्रा शोषित हो जाती है, तो वो अग्नि हो जाती है। फिर अग्नि चारों तरफ रहता है। अग्नि में से रूप तन मात्रा शोषित हो जाती है और भयंकर वायु फूंकावा लागे छे। वायु में स्पर्श तन मात्रा शोषित हो जाती है और केवल आकाश रहता है, और आकाश भी लीन हो जाता है। आत्यंतिक प्रलय बोलते हैं इसको। लेकिन ये आत्यंतिक प्रलय में खोडुबा दादा सूर्य सुधीना नीचेना बधाए लोको नष्ट पामी जाए छे। फिर भी इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक ऐसे लोग रहते हैं। और चौथा होता है महाप्रलय। महाप्रलय में शू थाय छे बा? आ लोको तो बधा लीन थई जाए, पण आ ब्रह्मलोक सुधीना बधाए लोको यत किंचित बधाए प्रकृति में लीन थई जाए छे। कोई ज फुरना नहीं बचता है,
કોઈ વસ્તુ વધે છે? જે તમારી ઊંઘ વખતે જે તત્વ વધે છે, નિત્ય પ્રલયમાં જો ઊંઘી ગયો છું तो अभी नींद को भी जानने वाला मैं हूं, मैं रहता हूं. જે ઊંઘમાં જે તત્વ વધે છે એ જ મહાપ્રલય પછી પણ બચે છે. वही आपका आत्मा है, बनता नहीं है, बिगड़ता नहीं है, प्रलयों का भी जो साक्षी है. तो आत्यंतिक प्रलय में तो ब्रह्मा भी नहीं रहते, विष्णु भी नहीं रहते, शिव भी नहीं रहते. केवल एक अखंड उस प्रलय का साक्षी रहता है, जो ब्रह्म के संकल्प में ही फिर से सृष्टि खड़ी होने वाली है. वही ब्रह्म मेरा आपा है. वहां से मैं बोल रहा हूं और तुम भी वहां से मैं बोल रहे हो. मैं है, वही तुम्हारा मैं है. तो आत्यंतिक प्रलय में भी ब्रह्मा नहीं रहते हैं. तो कितना ब्रह्मा हशे बाबा? हे राम जी, इस पृथ्वी पर बालू के किन गिने जा सकते हैं, लेकिन अनादि प्रवास हैं. उस ब्रह्म में दिख रही सृष्टि में कितने ब्रह्मा हुए वो जाने नहीं जा सकते. इतने इतने ब्रह्मा तो प्रकृति के एक संकल्प में मेरी सत्ता से खड़े होते हैं, फिर ले हो जाते, खड़े हो जाते, फिर ले हो जाते. वहां जाके अपने आप को मैं को बैठा दो. अधुना एव सुखी शांतो चित्ती विश्राम्य तिष्ठति. हमणा हालत अधुना एव सुखी शांतो बंध मुक्तोर भविष्यसि. यदि देह पृथक कृत्यम चित्ती विश्राम्य तिष्ठति. अधुना एव सुखी शांतो बंध मुक्तोर भविष्यसि. तो जिसको आत्मज्ञान नहीं है तो फिर अपने को कुछ का कुछ मानता रहता है, मानता रहता है. बस मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं. तो मारू मन मने दुखी करे छे. तारू मन तने दुखी नहीं करतु, तू तारा मन ने दुखी करे छे. भगवान तो कही रहे मन तो मारी विभूति है, एम कहे छे. आपने केम दुखी करे छे? अपने आप को नहीं जानोगे तो फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार जो तमारा में जो असंतोष है तमे बीजा ऊपर थोपो छो. मेरी पत्नी अच्छे नहीं है, मेरा बेटा अच्छा नहीं है, मारो पाड़ोशी अच्छो सारो नहीं, मारू मन सारू नहीं, मारी बुद्धि मने हैरान करे छे. तो हूँ तमने एम कहूं छू लालभाई के पहलो रस्तो तो आज छे. यदि देह पृथक कृत्यम, मन धर्म से अपने को मुक्त जान लो, ये पहला रास्ता है. तो स्पंदन को शांत नहीं करना पड़ेगा. जिसके सामने नजर नहीं दोगे ना वो शांत हो जाता है, शांत हो जाता. जो नाना छोकरा અત્યારે કેવા શાંત છે, દેખાય છે કોઈ? આ તો બધા સત્સંગી આવ્યા છે, પણ તમારા ઘેર મહેમાન આવવાના હોય ને, તમે જોજો. અને મહેમાન આવવાના હોય ત્યારે તમે ધ્યાન રાખ્યું, બધાને એડવાન્સ કઈ રાખ્યું, તોફાન ના કરતા, નાક ના કાપતા અમારું. અને ઘડીક થાય ને એની સામે જોશો એટલે બહુ કૂદે બા. अपने आप में बैठ जाओगे तो मन थक जाएगा. आई न पगे लागशे, हे मेरे आका हम कैसे. आप मन के आका हो, याद रखना. झालाजी मन के नौकर नहीं हो, तुम मन के आका हो. तो तभी तमारा में आई जशो तो मन नु स्पंदन शांत थी जैसे. और प्राण महाप्राण के साथ एक हो जाता है. जैसे समष्टि में जो प्राण चल रहे हैं उसी के साथ एक हो जाता है. पूरी समष्टि को जीता है ज्ञानी. ज्ञानी होता है पूरी समष्टि को जी रहा है, इस देह को नहीं जी रहा खाली. ये तो दुर्योधन हम पकड़वा जातो तो भगवान कृष्ण ने, अरे मूर्ख, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक विश्व खड़ा होता है. देख आम પોતાની વાણીની ચમત્કૃતિ અને યોગ બલથી એને બતાવી દીધું છે. જો આવા અનંત અનંત બ્રહ્મા તો મારા રૂવાડામાં બની બનીને ગુમ થઈ રહ્યા છે. इतना व्यापक हूं, किसको पकड़ने जाता है? विश्व के प्राण के साथ एक हो जाते हैं ज्ञानी. ज्ञानी एक हो जाते हैं. तो पहलो रस्तो तो आज है, बार बार सोचना, ज्ञान सोचो.
मैं कौन हूं उसका पता लगाऊं। મનની મારે શું યાર, મન તો કોકવાર હોય છે કરું, કોકવાર નહીં હોતું, પણ હું તો ત્રણ કાળમાં છું, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब में मैं हूं। उस मैं का पता लगाओ, कौन है तू भाई। तो मन खेल करता रहता है, कभी जागृत का खेल करता है, देखो देखने वाले को क्या है, कभी स्वप्न का खेल करेगा फिर भी देखने वाले को क्या है, और कभी थक के हार के सुषुप्त हो जाएगा फिर भी देखने वाले को क्या है। जागना सोना नित खाब तेरे आगे कोवे कई बारा, बुल्ले शाह प्रकाश रूप तू तेरे में वदगट होवे यारा। चांदना कुल जहान का तू तेरे आश्रय होवे सब व्यवहारा। तू सबदी आंखों में चमकता नंदुबा, अरे चांदना तुझे सूझे कैसे अंधियारा। चांदना कुल जहान का तू तेरे आश्रय होवे सब व्यवहारा। इस बात का पता चल जाता है तो मन नो काम खेल बतावानु छे, बात खत्म हो जाती है। उसका स्पंदन, प्राण का स्पंदन भी शांत हो जाता है। ज्ञानी के स्पंदन प्राण महाप्राण में मिले हुए हैं, शांत है, और मन का स्पंदन भी शांत हो जाता है। मन मानी क्या, मन मानी जो नहीं है उसको देख रहा है, उसको मन बोलते हैं। देह नहीं है फिर भी देह देख रहे हैं। अस्तित्व तो केवल एक चैतन्य विभू परमात्मा का है, लेकिन मन ऐसा देख रहा है। जैसे आकाश में नील वर्ण देख रहे हैं, देखो रस्सी में सर्प देख रहे हो, देखो जैसे रुई में रुमाल देख रहे हो, देखो सोने में गहने देख रहे हो, देखो मिट्टी में घड़ा देख रहे हो, देखो ऐसे ही ब्रह्म में जगत देख रहे हो, उस शुद्ध चिदानंद में जड़ चेतन देख रहे हो, और अपने को देह देख रहे हो। यही मन है। आ गड़बड़ कर तू रहे थे तो मन बाद हो जाता है, तो मैं ही मैं हूं, और क्या है, मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा दूसरा न कुछ है, न हो सकता है, न आगे भी था और पीछे भी रहेगा। तो पहलो रस्तो तो आ छे मारा बा પણ તોય પછી કે છે કે હવે આ મનનું મારે કે કરવું જ છે સ્પંદન, તો फिर दूसरा रास्ता योग का है। तो फिर धीरे धीरे आओ बाबा, ऐसे एक साथ नहीं चढ़ सकते, तो धीरे धीरे खाओ, एक एक कौल खाओ, तो धीमे धीमे खाओ, योग का रास्ता है। तो कैसे मन शांत होगा, तो चालो तारे पत्तू फेरवू होवे जो इतनी बात समझ लो तो फिर मिलना नहीं आना पड़ेगा भाई, बात खत्म। गुरु और शिष्य दो दिखते हुए भी दो दही हैं, उस तत्व का पता चल जाएगा। પણ આ બુદ્ધિમાં બેસે નહીં તો પછી બીજો એકડો આમનો આમ સીધો કાન ના પકડવો હોય તો આમ પગનો હાથમાં હાથ કાઢીને આમ થઈને પકડાવું ત્યારે तो मन शांत होगा, तब मेरे को आत्मज्ञान होगा, तब तो वो भी रास्ता है। चलो, तो कैसे मन शांत होगा? भगवान शंकराचार्य ने कोई अभी जो रस्तो है, चलो ये भी करना चाहिए। काल थी देव उठी 11 देव पौड़ी 11 है, 4 महीना अनुष्ठान करो, 40 દિવસ एक रूम में पैक थी जाओ। चलो, 1.25 મહિનો વધારે नहीं, बस आटलो समय अपनी पासे नहीं। ज्ञान करवू है तो पेगड़े पगने ब्रह्म उपदेश है, लेकिन मन को शांत करना है, एकाग्र करना है, मन की शक्ति को निखार करना है, कुछ फेरफार करना है प्रकृति में। अभी वासना हो तो आई रस्तो है, बोलोगे होने लगेगा, इसमें तो कौन सी बड़ी बात है। संकल्पों की सिद्धि हो जाती है, मन सूक्ष्म हो जाता है योग से, मन शांत हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, मन निरुद्ध हो जाता है। हाँ तो मननी शक्ति चमत्कार जोवा मळशे, જોવાવાળામાં કઈ ફેર નહીં પડે। આ વાત લખી રાખજો, જ્યારે પણ જવું છે ત્યારે ત્યાં જ જવું છે, પણ તો એ મન કો શાંત, ચલો કાલથી શરૂ થાય છે।
દેવ પોઢી 11 જ છે. દેવ પોઢ્યા છે ને તમે જાગો. બા આ દેવ પોઢી 11 કાલથી શરૂ થાય છે. શું છે આ? पूरी शयनातिथि पुरुष, इस शरीर रूपी पुरी में जो सोया हुआ है उस पुरुष को जगाने के लिए चतुर्मास है. देव उठी, अपना देव पोटेला है. विष्णु मानी व्यापक विभू सबको सब बधाना आत्मा है, पण आपड़ा तो पोटेला ज छे. तो जगाड़वो छे तो 4 महीनाનું છે અનુષ્ઠાન. ચાલો કાલથી હું કહું એ ખાજો, હું કહું એટલું બોલજો, હું કહું એટલું કરજો, હું કહું એટલા આગે ઉઠજો. આ રસ્તો છે. હા, આ રસ્તે આવવાની મજા છે. એકવાર જઈને આવ્યા હોય તો પછી આપણા મનમાં એની લાલચ ના રહે. मन, अरे भाई मन में क्या क्या शक्ति आप जानते नहीं हो. आ तो बाहर थी जानी रहा छो બધું. अपने मन को तो आपने कभी एकाग्र करके देखा ही नहीं कितनी शक्ति है. शक्ति का स्रोत तो तुम ही हो आत्मा, लेकिन वहां तक नहीं जा सकते हो तो पहलो पग અહીં રાખો મન ઉપર. જેવી રીતે બા પાણી હોય એ પાણીને ફ્રીઝરમાં મૂકી દો તો બરફ થઈ ગયું. એ પાણીની શક્તિ કુંઠિત થઈ ગઈ, જડ થઈ ગયું. અને એ પાણીને ગરમ કરી દો તો વરાળ થઈ જાય. वराड़ थई जाए तो आरसीसी ने चीरी ने निकले. सूक्ष्म हो गया ना. और सूक्ष्म हो जाता है तो पूरी रेलवे को खींच लेती है पानी. बाप बन जाता है. तो जितना जितना स्थूल होता जाता है उतनी शक्ति कुंठित हो जाती है. तो शरीर को मैं माना, संसार को सत्य माना, आपाधापी ये जड़ पदार्थ को बड़ा मान लिया तो मन कुंठित हो जाता है. बिचारा થઈ गया, बापड़ा થઈ गया. हाँ, तो मन को शांत करना, सूक्ष्म करना दूसरा रास्ता है. बा वो योग का रास्ता है. चलो करना है तो कल. मन सूक्ष्म हो जाता है. तो सूक्ष्म मन में शक्ति आवे छे. एकाग्रता मन में आपका मन एकाग्र हो जाएगा. एकाग्र करने से पहले मन को शुद्ध करना पड़ता है. जिस मन में राग नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है, वैर वृत्ति नहीं होती है, जलन नहीं होती है, असूया नहीं होती है, वो मन शुद्ध हो जाता है. वो ही एकाग्र हो सकता है. 4 रास्ता बताया है. योगस्य प्रथम द्वार वाक निरोध निरीह निराशा ब्रह्मचर्यम इति. तो निरीह जो हो जाता है, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष ज्यां सुधी छे त्यां सुधी तो मन बहिर्मुख रहशे. राग होता है तो वो भी माला करने बैठो तो भी याद आएगा. मारो दीकरो तो बा नंदुबा हिमालय गयो छे एवुं तो એના ઉપર બરફ પડશે તો શું થશે? અરે જાકો રાખે સાઈયા માર શકે ના કોઈ નંદુબા. પણ તો રાગ હશે તો मन की शक्ति बिखर जाती है. रागी व्यक्तियों के मन में शक्ति नहीं होती है, प्राण बल भी उनमें नहीं होता है, संकल्प भी नहीं होता है. જેટલો રાગ વધારે વ્યક્તિઓ ઉપર રાગ અને પદાર્થો ઉપર પણ રાગ. જેટલા પદાર્થ ઉપર રાગ કરશો ને એટલા પદાર્થો આગા આગા જશે. આવો નિયમ છે. और राग જેટલો એકરાતો જશે ને પદાર્થો તમારી સેવામાં આવશે. ये खाओ यहां बैठो. देखो जितने जितने महापुरुष होते हैं उनके साथ क्या होता है, ये खाओ यहां बैठो. बाप जी रही जाओ ने. राग कम है, राग नहीं है तो सारे पदार्थ उसके पीछे पीछे चलते हैं. और रागी क्या चाहता है, ये मिले, इसको सजाऊं. पूरी जिंदगी खप मरता है. फिर भी हाथ कछु ना आयो. रे मन मूरख जन्म गमायो. रे मन मूरख जन्म गमायो. यह संसार सुमिर को फल सुंदर देखी लोभायो. रे मन
मूरख जन्म लुमायो। चाखन लाग्यो रूई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आयो, रे मन मूरख जन। तो जिसके मन में पदार्थों का अधिक राग होता है वही भिखारी है, सुक्खा भिखारी बन के घूमता रहता है। मिलता तो कुछ नहीं है। હા જેનું મન રાગ રહિત હોય છે, सारी प्रकृति उसकी सेवा में हाजिर हो जाती है। तो व्यक्तियों से राग मत करो, पदार्थ से राग मत करो। तो मन एकाग्र करवा माटे पहला, मनना स्पंदनो बंद करवा माटे पहला राग द्वेष को मारना है। भावना करो। जब शास्त्र कह रहा है वासुदेव सर्वमिति, यहां वासुदेव के अलावा कुछ नहीं है, तो बार बार भावना करो। राग किससे करे, द्वेष किसके करे? 3 घंटे का खेल है और क्या है। जैसे एक नाटक देखते हैं उसमें 3 घंटे देखना है, ऐसा खेल है। 70 साल का खेल है, फिर भी खेल है नंदू माई। राग करो कि द्वेष करो। राग नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, किसी से ईर्ष्या नहीं होती है। आ बधु आज दशमना दाड़े मरी जाए तो ज अनुष्ठान काले चालू थाय। जो शुद्ध नहीं होता है वो एकाग्र नहीं होता है कभी, याद रखना। शुद्ध मन एकाग्र होता है। एकाग्र करने से पहले उसको शुद्ध करो। जब भगवान किसी को बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, तो फिर हम क्यों द्वेष करें? हम क्यों द्वेष करें उससे? क्यों करे भाई? પણ કોઈ પણ આગળ જાય છે તો માળા કરવા બેઠા હોય અને માળા કરતા કરતા દેખાય છે પાછું, રાહ જોઈ રહ્યા છે ક્યારે પડશે। પછી કહેતા હોય કે આ એક અનુષ્ઠાનમાં અમારે કેમ મેળ પડતો નથી? તો ક્યાંથી પડે? પણ તમે ભજન ક્યાં ભગવાનનું કર્યું છે? ભજન તો મન કરતા રહેતા है, जिसमें राग द्वेष है उसका ही भजन करता रहता है। क्या ठेकाणું પડે છે? ठेकाणું નથી પડતું। नरसिंह मेहता 7 दिवस में शिवजी ने प्रकट कर लीधा। भाभीए काढ़ी मेल्या અને કાઢી મેલ્યા તો અડધી રાતે જંગલમાં ગયા છે ને શિવનું શિવલિંગ હતું ત્યાં હાથ લગાવીને प्रकट कर लीधा है। शू कारण? अपना नहीं होता है, अपने अपना राग द्वेष साथ में लेके घूमते हैं मन का। ये बहुत बड़ा दोष है। जिसकी बुद्धि में, मन में राग द्वेष होता है उसकी मन की शक्ति बिखर जाती है। एनु मन विखरायेलू रहे थे, इकट्ठी नहीं हो सकती है, घनीभूत थी गयु। इसी में उलझे रहते हैं, इसी में उलझे रहते हैं, यही उलझे रहते हैं। तो राग द्वेष से रहित जिसका मन है, जिसकी बुद्धि में वैर वृत्ति नहीं है, क्षमा है, चालने भाई, जाने भाई, जब रोशन कीजिए कोई पूछे क्यों ही, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा जी हुई। लेने गाड़ी में भेगा थया छे, शू झगड़ा करशो? पूरा संसार एक प्याऊ है, दूसरा कुछ नहीं है। परब छे परब, અને આ પરબમાં આપણે ભેગા થયા છીએ। ખોડુબા દાદા, નંદુબા, હું, પ્રશાંત મૂર્તિ। अरे परब में छायड़ो है तो थोड़ी बार उभा ही रहिए बस। लेकिन कौन कब तक यहां खड़ा रह सकता है? कोण मन शांत थशे? गीता में बोल्या छे भगवान, जेनी बुद्धि में इच्छा, भय और क्रोध नहीं होय, एम क्या छे। क्यों होता है? આપણે જુઓ આપણા મનમાં ઈચ્છાના ડગલા પડ્યા છે બા, અને જેના મનમાં જેટલી ઈચ્છાઓ હશે એટલી ચિંતાઓ હશે, યાદ રાખજો। આ નાનું બાળક ચિંતા રહિત દેખાય છે, શું કારણ? ઈચ્છાનું રાહિત્ય છે। ઈચ્છાનું રાહિત્ય છે બા। અને જેટલા પણ ઈચ્છાના પાર જતા રહ્યા છે એટલા બધા જુઓ ચિંતામુક્ત। જેના મનમાં જેટલી ઈચ્છા હશે એટલો ચિંતાવાળો હશે। अपने को तो लगता है कुछ बड़ा बन जाएगा संसार में तो बहुत अच्छा। बाजे भिखारी मांगवा आयो छे, खावानी चिंता है खाली। पण आवडું મોટું કારખાનું મુકાભાઈ ચલાવતા હોય તો 150 કારીગરો।
તો વિજયભાઈ રૂપાણી નથી એનાથી વધારે હશે. બહુ ચિંતામાં. અને इंदिरा गांधी ने तो एनाથી વધારે છે. हे राम जी, इंद्र तक की पदवी जोखिम में. जोखम नहीं मिटता है भाई. जोखम तो मिटता है रमेश भाई इच्छा को मार देने से. मन की तरंग को मार ले बस हो गया भजन. यथा देवे तथा गुरु. जैसी भक्ति परमात्मा में वैसी भक्ति गुरु को ईश्वर जान ले बस हो गया भजन. तेरी मन की तरंग को मार ले बस हो गया भजन. तो જેટલી ઈચ્છા છે એટલી ચિંતા વધારે. મારા બા ઘણી વાર કહે છે હવે ચિંતા એનું કારણ એ જ છે ઈચ્છા નથી એટલે ચિંતા ના થાય. હવે કાલે જ મને કહેતા હતા આટલો બધો હોલ બને છે પણ જોવાય આવતા નહીં. ફીકું પડી જાય ભગવાનની ભક્તિ કરતા કરતા બા. આ બધું बनता है बिगड़ता है. नहीं था तब भी हम तो थे और नहीं होगा तब भी हम तो है. મારા રામની મરજીમાં થઈ રહ્યું છે. ઈચ્છા કરેગા वो फंसता है. તો જેટલી ઈચ્છા વધારે મુકાવી એટલી ચિંતા વધારે. તો ઈચ્છા કોની શેની થાય છે કહો? ઈચ્છા બધા પદાર્થોની થાય છે. ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए. તો મળવા માટે પછી મહેનત કરીશું અને કોઈક જબરો વચ્ચે પડશે ને તો ભય થશે. મારે લેવું તું જબરો વચ્ચે પડ્યો. આ અમે 1.5 કરોડમાં વીઘો વેચાય છે અને જો લેવી હશે ને તમારે તો કોઈક જબરો આવશે 1.25 કરોડ તો એની બીક લાગશે. ભય કોને લાગે બા? જેને ઈચ્છા વધારે છે એને ભય લાગે છે. ઈચ્છા જ ના હોય તો તું લઈ લે તાર. जैसे कुत्ता होता है वो हड्डी लेके घूमता रहता है और आधे घंटे के बाद हड्डी में से खून नहीं निकलता है, अपने ही दांत में से निकल रहा है. उसको ऐसा भ्रम हो रहा है कि इस हड्डी में से खून आ रहा है मेरे हाथ में और मेरे को बहुत बड़ी हड्डी मिल गई है. तो घूमता रहता है. हूं सरपंच હું તો બહુ શેઠ છું. મારે આટલી ઓળખાણો છે. આ બધા હાડકાથી વધારે કશું નથી બા. મને આટલા લોકો ઓળખે છે. મારા ઓકારે બધા બેસી જાય છે. મારી સત્તા ચાલે છે. પછી એ કૂતરાને સામે બીજું કૂતરું મળે તો મારા હાડકામાં ભાગ પડાવ્યો. जब बड़ा कूदता होता है तो भय लगता है. મોટું કૂતરું હશે તો બીક લાગે એને, મરી ગયા જાણે. આ કૂતરામાં જોજો ઘણા જબરા હોય, એનું તો ખાઈ જાય પણ પેલાનું એ છાંટમાંથી લઈ આવે. એવા જબરા હોય બીક લાગશે. પણ હાડકામાં સુખ માન્યું છે રમેશભાઈ એટલે બીક લાગવાની કે ભય નો अभयम सत्व संशुद्धि. ये अभय पद कैसे होता है? जब तक इच्छा होती है, चिंता होती है, तब तक भय रहेगा. बलवान से भय होता है. गवायो कूतरू. અને जो बलवान नहीं હોય બા, बलवान से भय होता है. નબળો હશે ક્રોધ થશે. તું શેનો આવ્યો? એક ભયમાંથી ક્રોધ થાય છે. બલવાન ઉપર કદી ક્રોધ ના થાય. ત્યારે કશું ચાલે નહીં બા. બળવાન ઉપર ભય નહીં થાય, ત્યાં ક્રોધ નહીં થાય. પણ જો નબળો આવશે તો ક્રોધ થશે. આ દેશી કૂતરો હોય ને પેલું જો અંગ્રેજી પોમેરિયન કૂતરું હોય તો તૈયાર થઈ જાય ધડાકા બંધ. तरह से हाडकू खावा दो हूं. तो भय होता है, क्रोध होता है, सब एक ही वृत्ति के नाम है. तो क्या बोलते हैं भगवान शंकराचार्य? मन शुद्ध होता है जिसमें राग नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, निरीह, इसमें ज्यादा इच्छा नहीं होती है. बस खाने की इच्छा स्वाभाविक है और जलेबी खाना, શીરો ખાવો, આ ઈચ્છા થોડીક વધી ગઈ તો એ સ્વાભાવિક છે. પણ કોઈ પણ ભોગે ખાવો
બીજાનું જૂંટવી લઈને ખાવો. હા હા હા, गमे ते रीते खाओ. जितने स्वभाव से और स्वाभाविकता से दूर होते जाएंगे उतना मन व्यग्र रहेगा, अशांत रहेगा. तो कौन मन ने शांत કરી શકે છે કે જે ઈચ્છા, ક્રોધ અને ભયથી મુક્ત છે. ગીતાકાર કહે છે વિગતો ઈચ્છા, ભય, ક્રોધ. છઠ્ઠા અધ્યાય ભગવાન કહે છે. તો એવાનું મન કેવું થઈ જાય છે પછી? હવે એવું મન એકાગ્ર થવા માટે યોગ કરે છે. યોગ કરશો તો મનની શક્તિ સૂક્ષ્મ થાય છે. योग द्वारा मन की एकाग्रता बढ़ती है. जप करें, ध्यान करें, ऐसे प्रयोग होते हैं. अपनी कुंडलिनी जगाएं, उसका मन शरीर विकसित होता है. मन शरीर विकसित हो जाता है. वृत्तियां शांत हो जाती है. शक्ति का पुंज हो जाता है योगी. दूसरे के मन की बात भी जान लेता है. बोलता है वो होने लगता है. જેવી રીતે નહીં નરસિંહ મહેતાને જે હાર ઉડી રહ્યો આ શું છે? આ એકાગ્ર મનનો ચમત્કાર છે, બીજું કશું નથી. હાર ઉડીને આવ્યો છે. હારને રે કાજે નવ મારીએ. ભગવાનમાં પરોવાયેલા મનનો ચમત્કાર જ છે આ. અરવિંદને જેલમાં દેખાયું છે. આ શું છે? આપણે ત્યાં બહુ મોટા સંત થઈ ગયા, પૂજ્ય મોટા, તમને ખબર હોય તો, ગુજરાતના. નામ જપ કરતા હતા, હરિઓમ 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 હરિઓમ. અને ગાંધીજીના બા પેલા એમાં જોડાયેલા. અને એ વખતે 1936-37 ની આ વાત છે. જેલમાં પૂરેલા અને બધાને જેલમાં પૂર્યા. એમાં નિયમ એવો હતો, જેટલા સ્વાતંત્ર્ય સેનાની છે બધાને એક લાકડી દેવાની, દાડ કરતી. 400 જણને પૂરેલા. એમાં આમનો 50મો નંબર હતો ને આગળ લાકડી પડી, દાડ. અને રૂજુ સ્વભાવના તો હતા. કેવો બાપા રે, એને વાગ્યું એ નતું ગમતું ને એમ કે મને વાગશે તો શું થશે? હા, ચુનીલાલ નામ જૂનું બા. અને બધી લાઈન આગળ વધે, 13મો નંબર આવ્યો, દાડ. જામી ગયેલા હતા સાધક. અંદર से अवाज आया, ત્રાટક કર, ત્રાટક કર. એટલે આ બાજુમાં તો એને પૂજ્ય મોટાએ પૂછ્યું કે ત્યાં કઈ અવાજ સાંભળ્યો? ના ભાઈ, હું તો આ લાકડીના અવાજ સાંભળું છું. अपना नंबर आया दूसरा, દાડ, ત્રાટક કર. અને જેવો આવ્યો અને પોતાની અંદર હરિઓમ જમ્પ હતો એમનો. એમને હરિઓમ આશ્રમ બનાયા છે બધાએ. આખા ગુજરાતમાં એના આશ્રમ છે, મૌન મંદિરો છે. આ તમારા સાણંદના બળદેવભાઈ ડોસાભાઈ મિલ માલિક એ પૂજ્ય મોટાના શિષ્ય હતા. અને એક દાડો આયા એમની પાછલી અવસ્થામાં કે બાપજી મારા માટે કોઈ આજ્ઞા, મને સાક્ષાત્કાર થશે કે તારી અડધી મિલકત તારા છોકરાને આપી દે અને અડધી મિલકત આખા ગુજરાતમાં હોસ્પિટલો બનાય. બળદેવભાઈ ડોસાભાઈ આ મિલ માલિકને આદેશ કરી દીધો. આ કક્ષાના ગુરુ હતા. અને હરિઓમ એમનો મંત્ર. અને જેવો એમનો નંબર આવ્યો અને અંદરથી હરિઓમ 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 કરીને આમ ત્રાટક કર્યું છે. ઓમ પેલો મારવા હોય રે. અને પેલો જે આગો બેઠો તો એ આવ્યો કે શું કરે છે? કે મને કંઈક થાય છે. અરે ક્યાં સમજતા લા, એ આવ્યો છે મારવાને માટે. અંદર તો अरे एकाग्र मन में शक्ति होती है, क्या समझते हो, क्या समझते हो? वो शक्ति आप भी विकसित कर सकते हैं. नहीं करेंगे तो गिड़गिड़ाते रहो. જ્યાં સુધી આ મન સૂક્ષ્મ ને એકાગ્ર ના બને ત્યાં સુધી આ જગતના પદાર્થો માટે બૂમો પાડતા રહો. અને આ એકાગ્રતાની શક્તિ બની ગઈ. આવ્યો અને ત્રાટક કર, અંદરથી જ અવાજ આવેલો, હરિઓમ હરિઓમ હરિઓમ. આમ ત્રાટક પાછળ પડે છે. આ બનેલી ઘટના છે, પેપરમાં બીજા દાડા આવ્યું છે. અને બા નંદુબા જઈને પેલો અંગ્રેજ જેલર હતો, અંગ્રેજ જેલરને વાત કરીને એ આવ્યો છે કે સિગરેટ ફૂંકતો ફૂંકતો આમ આવ્યો, આમ લાકડી મારવાને ગયો છે. ત્રાટક કર, અંદરથી વાત.
में शक्ति होती है। आपने अपनी शक्ति बिखर के रख दी है। हमारा गुरुजी था शामળનાથ, મજાક નહીં કરતો, ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી આવા યોગ્યો આ ધરતી ઉપર જન્મે। ક્યાંથી આયા હતા, શું કર્યા હતા, શું પ્રશ્ન લઈને આયા છો, કશું પૂછવાનું નહીં, બધું ચાલુ જ। આજ તમારો પ્રશ્ન હોય ને એ જ જવાબ, ધડાકા બંધ। એવા પ્રખર યોગી બા મન કી શક્તિ में મનમાં આટલી શક્તિ છે। જો ત્યાંથી પગથિયું મૂકીને જવા માંગતા હોય તો યોગીઓની રીત છે। અંદરથી અવાજ ત્રાટક અને આમ કરીને હરિઓમ કરીને ત્રાટક। અરે પછી પૂછ્યા છે પેલું અંગ્રેજ કે આ શું થાય છે મને? તો કે તમે કોણ છો? બધું પરિચય આલ્યો કે ઓ ગોડમેન સ્પિરિચ્યુઅલ પર્સન। અંદર લઈ ગયો એમની જગ્યા ઉપર। હા, મન પણ સામેવાળાનું ફરી જાય બા। જ્યારે તમારું મન શુદ્ધ અને વ્યાપક હોય, તમારી આ ભાવક કોઈ આવે કે રહી જ ના કે ऐसे योगियों का मन होता है। લઈ ગયો અંદર અને નિયમ પ્રમાણે તો બેલ મલબામાં વાર હતી કે અરે આમને બેરેક અલગ આપજો, આજે સવારે ભજન સાધના કરે છે એમના માટે વ્યવસ્થા કરજો અને જમવામાં ઘી ને ગોળ આલજો બા। અને પૂજ્ય મોટા વિચાર કર્યો કે આટલો જપ કર્યો એમાં પ્રભાવ થયો છે તો જો આગળ પેસી જવું તો શું થાય? रास्ता खुल जाता है। गई सदीना बहु मोटा संत થઈ ગયા પૂજ્ય મોટા સાક્ષાત્કારી પુરુષ હતા અને મનને એકાગ્ર કરવા માટે જપયોગ પકડ્યો છે। તો કોઈ ધ્યાન યોગ પકડે। અમારા ગુરુજી શામળનાથજી हमारो बधानो ध्यान योग। ऐसे ध्यान करते 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 मन के स्पंदन शांत हो जाते, शांत होते हैं, शुद्ध होते हैं, एकाग्र होते हैं और मन में असीम शक्ति होती है, असीम शक्ति होती है। अपनी शक्ति उनकी होती है। ऐसे शक्ति सामर्थ्य वाले हो जाते योगी, हो जाते। या पहला उपाय तो मैं तुमने बता ही दीधो है। ये थी जाते तो फट निकली जाओ, फट ना निकलो तो आ रस्तो है। आओ धीरे धीरे। योगी थवु होय तो पान बाई, संकल्प त्यागो ने एवी रीते आदर जो अभ्यास रे। योगी थवु होय तो पान बाई। जितने मन में संकल्प होते हैं, विकल्प होते हैं, संकल्प होते हैं, उतना मन दरिद्र है। जैसे संकल्प हुआ आपका कुछ तो उसकी ताकत होती है और बाद में अपने संकल्प को काटने वाला अपना ही विकल्प होता है, अपना ही विकल्प होता है। જેવી રીતે અત્યારે મેં કીધું એટલે બધાને એમ થઈ ગયું કે કાલે 4 મહિના મારે સાધના ગુરુજી કે એમ જ કરવી છે। આ બેઠા બધાને થઈ ગયું સંકલ્પ, પણ પાછો વિકલ્પ ઉભો થશે ઘેર જઈશું એટલે આપણો જ વિકલ્પ બેહાડી દે સંકલ્પને બુમ કરતો કે બાપજી તો સાધુ થઈ ગયા છે, એમને તો બધું પોહાય, આપણે તો બધું આ ઘર ગ્રસ્તી લઈને બેઠા છીએ। મારા ગુરુજી મને કશું છોડાયું નથી, ખાલી મારી મૂર્ખામી જ છોડાઈ છે। आप भी अपनी मूर्खामी छोड़ दो, छोड़ना कुछ नहीं है दूसरा। કે બાપજી તો આપણે તો બધા ઘર ગ્રહસ્થી લઈને બેઠા છીએ તો આપણને થાય, એ આપણાથી શું થાય? કે પ્રશાંત મૂર્તિ તો 3 વાગ્યાના ઉઠીને ગુફામાં બેસે છે, ધ્યાન સારણા કરે। એ તો કરે કે કેટલું બધું ગયા જન્મથી કમાઈને આવ્યા છે અને કેટલા બધા કરોડના રૂપિયા એમની પાસે હોય એટલે એ તો કરે। હવે આપણાથી આ વિકલ્પ होता तो अपने मन की संकल्प को अपना ही विकल्प मार देता है। और क्या? तो कभी विकल्प ना हो और ऐसा संकल्प योग से आता है। योगी में संकल्प बल होता है, वो आप में भी आ सकता है यदि मन की तरंग शांत हो जाए। प्राण की भी तरंग फिर शांत हो जाती है। लेवा तो 10 અને મૂકા તો 12 આગળ શ્વાસ છે।
योग करते करते प्राण स्पंदन निरोधात जहती स्ववेगम मनः। विवेक चूडामणीમાં ભગવાન શંકરાચાર્ય કહે છે પ્રાણ સ્પંદન નિરોધાત વાસના ત્યાગાત સત્સંગાત હરિભક્તિ યોગાત નામ સ્મરણ જપાત मन स्ववेगम जहती शनेहै। तो नित्य का अभ्यास करेंगे तो प्राणायाम के अभ्यास द्वारा प्राण की गति को देखने रोकने बदलने से मन भी धीरे धीरे शांत होता जाता है और प्राण भी शांत हो जाता है। उस योगी में प्राण बल होता है, प्राण बल। जंगलों में घूमते रहते हैं, देखो भय नहीं रहता फिर उसको। ऐसी योग की महिमा है। तो ये रास्ते में आना चाहो तो ये करो, बधी इंद्रियों संयम करो, मन नो संयम करो, खाने में बोलने में संयम करो। कुछ भी खाना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी इंद्रियों के भोग में प्रवृत्त होना है तो धर्म की मर्यादा है वो क्या जानो। देश काल का ख्याल करो कि देश अनुकूल है, काल अनुकूल है कि नहीं है। ये रास्ते पे आना चाहते हो तो पहले उठ जाओ 4 बजे, 4 बजे पथारी छोड़ दो। नहीं तो मनुष्य के जीवन की धारा तो चल रही है, काल उसको काट रहा है। बच्चे पैदा कर लिए, बड़े कर लिए, मकान बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये तो कई अवतारों से करते आए हो। आखिर में कुछ मुंह में नहीं आने वाला है। आखिर में मैंने शू मळशे आनो विचार करो। आखिर में मूडी मूडी आ बार पकड़ी है कशु ए मूडी नहीं। जो भीतरनी मूडी आई जशे तो इंद्रनी पदवीए रंक लागशे। भीतरनी मूडी अरे बारना 2-5 करोड़ रुपया तमने आटला ताजा राखे छे तो भीतरमां जेने पोतानुं मन एकाग्र कर्युं हशे, जेने मनने शुद्ध कर्युं हशे, मनने ईश्वरमां लगाव्युं हशे, प्राणना स्पंदन ओछा कर्या हशे, एनी मालदारीनुं तो केवुं शुं। हमारा बापजी बोल्या छे, शंकर कहे गुरुदेवनी दयाथी सहजमां मळी छे मालदारी, अमे तो मोटा व्यापारी ने। व्यापारी व्यापारी अमे तो मोटा व्यापारी ने। मालदार होय ए तो वरे मोगा माल ने, और शू शके पेला भिखारी, अमे तो मोटा व्यापारी रे। शंकर कहे गुरुदेवनी दयाथी सहज मामड़ी छे मालदारी, अमे तो मोटा व्यापारी रे। योग के द्वारा मन शांत होता है, मन विकसित होता है, मन सूक्ष्म होता है, प्राण भी शांत हो जाते हैं। ऐसी साधनाएं होती है। प्राण ऊपर काबू आई जाए, काबू। फिर जैसे चलाना चाहो, इंगला पिंगला सुषुम्ना, उसमें भी कोई भी तत्व का प्राण चलाना चाहो। जेवी रीते बहु प्रेक्टिस थई जाए तो वातो करता करता गाड़ी नो गेर नहीं बदली देता। टॉप में नाखीने धमाधम 2 लाख ની લેવડ દેવડ फोन में बात करो, 2nd 3rd 4 કરી રહ્યા છો। ऐसे ही योग का अभ्यास होता है। जिसको अभ्यास जग जाता है तो बात खत्म फिर। लेकिन अपने આપણું મન ઘણું નબળું અને સંસારના આ પદાર્થોમાં રાગવાળું હોવાના કારણે ये तो चोट तो एक बार में लग जाती है। लगने वालों को तो बार बार 12 साल से सुनते रहते हैं, फिर भी थाय छे तारे, थाय छे तारे, थाय छे तारे। काल आईने पकड़शे અને ठन ठन पाल હતા એવા એવા ઉઠાવશે। એના પહેલા ઝાલાજી મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા નક્કી કરી લો।
ज्ञान पकड़ सकते हो तो पहले कहा है, और ये नहीं पकड़ सकते तो योग का आधार लो और ज्ञान को टिकाओ। दोनों बात एक साथ पकड़ो। हाँ, योग का आधार लो। काले देव उठी पौड़ी 11 છે, કરો કાલથી ચાલો। કેટલા ભૂખ્યા રહી શકો, કેટલા બેસી શકો, કેટલા જપ કરી શકો, कैसे कर? अरे 25 दिन के अंदर तो आखो चेहरानो रंग ज बदली जशे, मोढું જ પહેલા तो आखो प्रभाव फरी जशे। ऐसी योग का सामर्थ्य होता है। आखो चेहरो ज बदली जशे 25 દાડામાં। ऐसा योग का सामर्थ्य होता है। लेकिन अपने को करना कुछ नहीं है, सब तैयार मिल जाए ना। कोई देवी प्रकट हो जाए, देवता प्रकट हो जाए, माथा पर हाथ राखी दे, બધું डायरेक्ट कराई दे। આપણે બધા डायरेक्ट જોઈએ। करना कुछ नहीं है, बस तैयार रोटी पे बैठना है। अरे तैयार रोटी भी मिल सकती है, गुरु की शरणागति ऐसी हो तो, याद रखना। लेकिन हम श्रवण करते हैं, लेकिन शरण नहीं है। जो श्रवण होते हैं उनको शरण भी होना है, लेकिन शरण नहीं होते तो फिर श्रवण करते रहते हैं। श्रवण लंबा चलता है फिर। कुछ भी किए बिना भी प्राप्त हो सकता है, यदि शरणागति ऐसी हो तो। शरणागति ऐसी बहु अघरू। श्रवण करવું बहु સહેલું, शरणागति થવું बहु अघरू છે। और गुरु को शरण हो जाते, उसको योग करना नहीं पड़ता है। उसको योग है ना, योग खाली बोनस में મળે છે। हाँ, जैसे पिता की जो मिल्कत होती है बच्चे की हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता उसको, खाली पाछળ नाम લખાવવું પડે। કૃણાલ મુકેશભાઈ ચૌહાણ આટલું લખાવવું પડે। તો મુકેશભાઈ ની બધી મિલકત કુણાલ ની થઈ જાય, કુણાલ ની થઈ ગઈ। આ કરોડો जो ભેગા કરે બધા એના થઈ ગયા। ऐसे कोई गुरु के हो जाते हैं, उसका मार्ग एनो मार्ग टूंको थी जाए। अपने तो वो भी नहीं कर सकते। 3 में से एक करना पड़ेगा, याद रखना। एक तो ज्ञान हो जाए तो जनक राजा की नाई फिर घूमो, क्या तो फिर योग करो। चलो धीरे धीरे रे मना धीरे से कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा और ऋतु आए फल होए। डगलू डगलू कापता लांबो पंथ कपाय, पूछता पंडित नी जेने लखता लइयो थाय। डगलू डगलू कापता लांबो पंथ कपाय। गुरु मंत्र के जो 1 करोड़ जप कर लेता है, उसके भाग्य की रेखा बदल जाती है। जो मंत्र होता है, हाँ तमे अत्यारे तमारो आ जे हाथ छे एनी रेखाओ अंकित करो, कंकुवाड़ा हाथ करीने, अने 1 करोड़ जप करो। भाग्य रेखा नहीं हो तो फूटी आवशे। एना ऊपर जेटला पण बंध छे बधा बदलाशे। गुरु बुध शुक्र आ बधा पर्वतो उपसीने आवशे। मेटत कठिन कुवंक बाल के, ऐसा हो जाता है। 1 करोड़ जप करे ना, 13 करोड़ जप करे तेनी कुंडली जागी जाए, कुंडली शक्ति जग जाती है। ऐसी जप में सिद्धि होती है। बीज मंत्र सहित व्यावृत्ति सहित जो जप करता है, अकार उकार मकार ओमकार का जप करता है, आ ब्रह्मांड ની પેલી પારના લોકો સાથે સંપર્ક તપાઈ શકે છે। ऐसी शक्तियां होती हैं योग में, लेकिन करना कुछ नहीं ना। सुनना है तो सुनो, लेकिन श्रवण के साथ शरण होना चाहिए। शरण भी छोटे बच्चे जैसा होना चाहिए, उसमें अपना कुछ नहीं चलता है। ऐसा शरण होवे तो बात खत्म, नहीं तो फिर डट पड़ो, डट पड़ो। जैसे विवेकानंद डट पड़े। देखो भगवान बुद्ध देखो, घर से निकल गए तो जे गुरु जे साधना बताई फॉरफिट કરીને बताई दी पाછી। लो आ जुओ, आ पूज्य मोटानी बात करिए। વાયનું ફેફરું રોગ થયો તો વાય આવે, ઘડીક થાય ને હુ કરીને પડી જતો, અને બધા પેલું આમ શું ગાળે જોડું,
હું નાનો હતો ત્યારે પૂજ્ય મોટા, બહુ નાનો, 6ઠ્ઠા ઉંમરમાં ધોરણમાં હતો, અમારા એક સાહેબ હતા સંસ્કૃતના, ધોતી સાહેબ, અને પૂજ્ય મોટાના થોડું સાધના જાણતા હતા. એમનો પ્રેમ લાઇબ્રેરીમાં લઈ જાય, મને આવડી આવડી ચોપડીઓ આપે, અહીંયા જો આ શું છે, આ વાક્ય વાંચ એમ કહેતા. એમાં એમનું એક વાક્ય હતું, હું સર્વત્ર વિદ્યમાન છું. હા, આવું બોલે. તો હું પેલા સંસ્કૃતના સાહેબને પૂછું કે આ હું સર્વત્ર વિદ્યમાન છું એવો અનુભવ કેવી રીતે થાય? પૂજ્ય મોટાનું શરીર તો 76માં છૂટી ગયું હતું અને મારો 76માં જન્મ છે, એટલે મને કોઈ પ્રત્યક્ષ દર્શન નહીં, પણ એમને મળે, એમની વાત, એમની સાથે બેસવાથી ઘણા બધા એમના જીવનનો પ્રસંગો મને ખબર. તે બા આમ વાયનો રોગ થયેલો, આ એક પ્રકારનો માનસિક રોગ છે, અને નાનપણમાં યુવાનીમાં ત્યાં વાય ફૂ કરતા પડી જાય, પીણાઈ જાય. એક દિગંબર રહેવા વાળા ઉપાસની બાબા એમને મળેલા કે આ રોગ મટાડવો છે તો તું હરિઓમ હરિઓમ જપ. પણ અહીંયા ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ભણવા આવેલા તો ગાંધીજીને ગુરુ માને પાછા, એટલે ગાંધીજીને કાગળ લખ્યો. એટલે ગાંધી બાપુએ કીધું કે એવો કયો રોગ છે જે ભગવાનના નામથી ના મટે? અને પાકું થઈ ગયું. જયારે ઈશ્વર આપણને ઉઠાવવા માંગે ને ત્યારે મહાપુરુષોનો સંગ થાય, આવો નિયમ જ છે. હા, તો ક્યાં ચુનીલાલ બા, હાવ ખીચા ખાલી ચુનીલાલ, અને ક્યાં વાય ફેફરૂનો રોગ થનારો, અને ઉપાસની બાબાએ મંત્ર આલ્યો, અને ગાંધીજી જેવાય ટાપસી પૂરી. આ મંત્રનો જપ તો ક્યાં લઈ ગયો? સાક્ષાત્કાર કરી લીધો. એમની ઉત્તર અવસ્થામાં આખી ગુજરાત સરકારના કે કોઈ સરકારના કોઈ એવા ઉચ્ચ અધિકારી ના હોય, કોઈ એવા શેઠિયા ના હોય, કોઈ એવા અધ્યાત્મમાં આગળ વધનારા વધેલા ના હોય જેમને પૂજ્ય મોટાના નામથી રોમાંચ ના થતો હોય. એવા થઈ ગયા તો કેસે હો જાતે. જેવી રીતે બાપુ ગાંધી અંધારામાં જતા બીતા દામ હું કરીને બીવે, તો પેલી દાસી રંભા દાસી હતી, અને એને કીધું કે અંધારાથી શું બીવે છે? વાણિયાનો દીકરો તો કોઈનાથી બીવે નહીં, તું બીવે મને બહુ બીક લાગે. પણ કે બીક લાગે ને વખત રામ રામ કરવાનું. એ રામ રામ તો ક્યાં લઈ ગયું ગાંધીને? आंतरिक शक्तियों का विकास हो जाता है. रकार लंबा और मकार टूंका, अनाहत चक्र विकसित हो जाता है. अंग्रेज सरकारों फौज होती तो एकली लाकड़ी थी उभा जाए, आत्मबल होता है, दूसरा कुछ बल नहीं होता है. राम नाम नो मंत्र. हमनो मणिलाल बीमार थयो तो मणिलाल ने बा मणिलाल बीमार थयो बधा डॉक्टर आया कि आने चिकन सूप आपवो पड़शे, 2 रोग भेगा छे. चिकन सूप में तो दाड़े आने मान्या नहीं, माने नहीं, पण के ना मारी पासे राम नामनी औषधि है. कस्तूरबा ने आम ले मेल थाय. राम नामनी औषधि बा, राम नाम की औषधि जो खरी खंत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, मां रोग मटी जाए. लो મહાદેવભાઈ દેસાઈ અને છેલ્લે છેલ્લે તો બધા સારસ્વિદ ડોક્ટરો એમની બાજુમાં બેસતા, અને કોઈ આવે કે બાપુ આ રોગ થયો છે, રામ રામ કરજે. આ બધાને એમ થાય કે આ ડોહો શું કે છે, આ કઈ રીતે વૈજ્ઞાનિક રીતે સાબિત થાય? જા કે અચળ શ્રદ્ધાથી તને મટી જશે. બાપુ એમ કે ગાંધી अपने महत्ता जानते नहीं ना गुरु मंत्र का. फिर 2 દાડા જપીએ, 3 દાડા ના જપીએ, 3 દાડા જપીએ, 15 દાડે આવીએ, પછી પાછું એકાદું કોઈ મળી ગયું હોય અને કંઈક બીજી વાત કરી હોય તો તમે આ રીતે નાડી ખોલશો એટલે આમ. अरे मूर्खों की कमी नहीं होती है. गुरु को एक बार पहचान लो, फिर उसे उनकी बात को मंत्र मूलम गुरु वाक्य में होता है. गुरु आज्ञा संपथ्य नहीं, औषध विचार ज्ञान, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, અને સદગુરુ વૈદ્ય સુજાણ. અને આ રોગને મટાડવા માટે ગુરુ આજ્ઞા સંપથ્ય નહીં. એ ગુરુ આજ્ઞાની બહુ ચરી હોય છે. કેટલો મંત્ર આપ્યો હોય, વખતે આજ્ઞા આપી હોય, પણ થાય છે.
અરે જેટલો કલાક આ મોટો કપ ભરીને ચા પીતા થઈ છે એટલો તો માળા કરતા થાય નહીં, પણ કરશે ના કે હા છે. હવે ટાઈમ જ ક્યાં મળે છે કે આટલી બધી સેવા કરવાની હોય ને, એટલે સમય જ ક્યાં છે. કેટલી બધી માળે સેવા કરવાની હોય, સમય જ ક્યાં મળે છે. અરે મની રામ અપની મની રામ કો સમજાવો. આહા, લેકિન આ બધા પ્રમાદી મન છે, પ્રમાદી. અને ભગવાન વ્યાસને કોઈ પૂછ્યું મૃત્યુ એટલે શું? પ્રમાદો વય મૃત્યુ, બીજું નહીં. જયારે મનને પ્રમાદ ગીરી વળે એ સાધકનું મૃત્યુ. નહીં તો શું કરવું છે ને શું ના થાય, શું કરવું છે તમારે ને શું ના થાય याद रखना. लेकिन करना नहीं होता है ना, जैसे मन शिथिल होते हैं. आम लफर फफर તું જા હું આવું, તું જા હું આવું, તું જા હું આવું છું, તું જા હું આવું છું, પારા તું જા હું આવું છું. કારણ કે કાલે જ મેં સાંભળ્યું છે ગુરુ આજ્ઞા સંપત્ય નહીં. अच्छा ऐसे नहीं होता है जब ऐसे जब नहीं होता है તો જેનું મન નબળું હોય તો ભાઈ સંસાર કો ઝૂકતે રહો 5-50 રૂપિયા માટે, भय खाता रहो, बता ठोकर खाता रहो. जब अंग्रेज का मन बदल सकता है, पूज्य मोटा ने देखा, तो क्या नहीं हो सकता है आपके मन से. इस सृष्टि में भी हलचल हो सकती है, याद रखना. ऐसी अथाह शक्ति आपके मन के भीतर पड़ी है. मना शरीर का विकास करके देख लो. तब तक मनुष्य नहीं है आप. आहार निद्रा भयंच मैथुन, ये 4 संस्कार तो पशु में भी होते हैं. उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ये 4 में होती रहती है. जैसे खाना, तो कुत्ते को भी पता चलता है क्या खाना नहीं खाना. सो जाना, ये प्रवृत्ति भी सब प्राणी में स्वतः ही होती है, स्वाभाविक. मैथुन और भय, जब तक मन शरीर का विकास नहीं किया तो मनुष्य नहीं है. मनुष्य रूपेण मृगाचरंती, ये मनुष्य के रूप में पशु ही चर रहे हैं. और पशुता से कुछ ऊपर उठना है तो डट जाओ. काले देव 11:30 છે, देव उठी 11 સુધીમાં સાક્ષાત્કાર કરી લો. कृष्ण कन्हैया रामचंद्र भगवान सदगुरु. ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. 5 મિનિટ.